So we are going to learn the topic time of flight, horizontal range and resultant velocity of projectile under horizontal projection. Chapter number 4, motion in a plane. So let's start. First of all, time of flight. Definition: the time taken by the projectile to complete its trajectory. What is trajectory? Trajectory means होता है path. Path of projectile is called trajectory. So we understand it through a diagram. So this is OA is a tower of height h. h height का एक tower है and this is the position of projectile, initial position. ठीक है, we are taking it in 2 dimension, x and y. Now the projectile is thrown with initial velocity u in horizontal direction only. So what will happen? After that it will move under the effect of gravity only and reaches the earth surface at point B. ये earth surface पर B point पर पहुंच जाएगा. Okay, now the time taken by the projectile to complete this path is called time of flight. ठीक है, हमें इसके लिए एक्सप्रेशन निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए. ओके, बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक कुछ और बेसिक आपको बता देता हूँ. बिकॉज द मोशन इज़ इन 2 डायमेंशन, तो यहाँ जितने भी वेक्टर क्वांटिटी है सबके हम 2 कंपोनेंट लेंगे, दैट इज़ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट. यू के कंपोनेंट ले लेते हैं, यू एक्स एंड यू वाई. यू कैन चेक इट. व्हाट इज़ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट? u vector is acting only in horizontal direction. ठीक है, so ux is u, but there is no component of initial velocity in y direction, so uy is 0. Then next vector is acceleration. ठीक है, इसके भी 2 कंपोनेंट लेंगे, ax and ay. अब यहाँ थोड़ा सीखिए आप. Because the projectile, in projectile motion, the projectile move under the effect of gravity. तो यहाँ पर जो है acceleration आएगा, that what is that? Acceleration due to gravity. ठीक है, और as you know the direction of acceleration due to gravity is towards the center of earth. It means it is acting in y axis. ठीक है, उसमें भी आप देखेंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन यानी -y. तो acceleration due to की gravity की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर? -g. That is acting in y direction. ठीक है, सबसे पहला ax horizontal component of this acceleration due to gravity. No component is there because acceleration due to gravity acts only in y axis, vertically downward direction. So ax is 0. And what is the value of ay? -g. Because ay means y axis में जो कंपोनेंट है दैट इज -g. डाउनवर्ड डायरेक्शन तब काम कर रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो ay इज ऑलवेज -g. इसके अलावा हमारे पास हम b पॉइंट पर हैं, तो हमें b पॉइंट पर कोऑर्डिनेट निकले पड़ेंगे x एंड y. डिस्प्लेसमेंट कितना है, पोजीशन में क्या चेंज आया है विद रिस्पेक्ट टू a. इनिशियल पोजीशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इज a एंड द कोऑर्डिनेट इज 0 0. ठीक है, अब आपको पहुंचना है b पॉइंट पर. b पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल x displacement and then y displacement. X displacement is equal to OB. I am writing it x. And from here this displacement is equal to h. Okay, minus h because it is in below the reference point A. A से नीचे की ओर है, -y डायरेक्शन तब काम कर रहा है, तो -h. सो द कोऑर्डिनेट ऑफ B इज x, -h. क्लियर? नाउ वी विल यूज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन इन y डायरेक्शन टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट. सेकेंड इक्वेशन इन y direction. Okay, let us see what is second equation in y direction. That is y equals to uyt plus half ayt square. This is the second equation of motion in y direction, just similar to the equation
as you have learnt in 9th class, s equals to ut plus half at square. Now we will put the value of each terms y, uy, ay. Let us see. It is given in the diagram. Y at point B, what is the y component coordinate? That is equals to minus h. Equal to uy. You can check it. No component of initial velocity in y direction, 0, 0. Multiplied by time. A to B time is equal to time of flight, that is capital T, plus half ay, acceleration due to gravity in y direction, that is equals to minus g, and then again t square. Okay, now this term is 0, so minus h equals to minus half gt square. And after solving it, after simplification, what is the value of t square? That is 2h by g. And then the final formula of time of flight is, that is root 2h by g. This is the expression for time of flight in horizontal projectile motion. Clear? You can also find here the factors on which the time of flight depend. किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है? देखिए, इस फॉर्मूले में सिर्फ हाइट और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है. इट मीन्स t डिपेंड्स ऑन h means tower of height of tower, but is independent on initial velocity u. आप देखेंगे इस फॉर्मूले में u नहीं आया है, इसका मतलब है कि ये इनिशियल वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता है, ये सिर्फ और सिर्फ हाइट ऑफ टावर एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर डिपेंड करता है. दिस इज अवर फर्स्ट एक्सप्रेशन. नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड एक्सप्रेशन. व्हाट इज दैट? दैट इज हॉरिजॉन्टल रेंज. First of all, definition. The horizontal distance covered by projectile from the foot of the tower where to the point where the projectile hits the ground. चलिए इसे डायग्राम से समझते हैं. This is our projectile, same terms. OA, height h. This is the initial position of projectile, 0, 0. Then the projectile is thrown in horizontal direction with initial velocity u, and then it will reach at point B. Time taken is capital T. Okay, then the coordinate at point B is x and minus h. These are the coordinate of projectile at B point. ठीक है. Okay, now let us see. We will use in this times, first of all, definition. Projectile distance, horizontal distance covered by the projectile from the foot of the tower. Foot of the tower means O point. Okay, and then to the point where the projectile hit the ground. Projectile ने hit कहाँ किया ground को? B point पर. So this horizontal distance is called horizontal range. ठीक है, इससे हम हॉरिजॉन्टल रेंज कहने वाले हैं अब, डिनोटेड बाय कैपिटल आर. सो वी हैव टेकन इट एक्स. सो नाउ एक्स विल रिप्लेस विद कैपिटल आर. एक्स ओ बी, दैट इज इक्वल टू कैपिटल आर, हॉरिजॉन्टल रेंज. नाउ यूजिंग सेकेंड इक्वेशन इन x direction. X direction, y, x direction, because horizontal component is there. We have to find the horizontal component x. So using second equation in y x direction, x equals to uxt plus half axt square. This is our second equation in x direction. Okay, now we will put the values. X, you can check it.
at B point, what is the value of x? That is equals to r, horizontal range, equal to ux. Ux, as you know, horizontal component of x component of initial velocity, that is equals to u, multiplied by t, time taken from A to B is time of flight, plus half ax, acceleration due to gravity in x direction. No component is there. Acceleration due to gravity always work only in vertical direction, that is y axis, only in vertically downward direction, that is 0. Ax is 0. Ax is 0. No component is there. And now t square. So this value is 0, and we'll get the final result of horizontal range r equals to u multiplied by t. You can also put the value of capital T, time of flight. We have earlier calculated it. So the value of time of flight is root 2h by g. So this is the expression for horizontal range under horizontal projectile motion. Remember this formula. Now we will move to the next derivation, resultant velocity, or you can say the velocity of projectile at any time t. We will take it as v. So again we will draw the diagram. This is projectile and this is initial velocity, h height, o point, a point, 0 0 initial position of projectile, and this is the path of projectile. In this diagram, now in this derivation, we will find the velocity of projectile at any time. Okay, so let us assume that after t time, the position of projectile at this path is here. Suppose that this point is P. This is the position of projectile after t time. So initial velocity is u, but what is the velocity at this point P? That is called resultant velocity. So how to find the direction of velocity, because velocity is vector quantity. So in this path, if you draw a tangent line, so this will give the direction of resultant velocity that we have to calculate. Now इसको कैसे calculate करना है? As we know, vector quantity है velocity, so it has two components, rectangular component. One is horizontal component, Vx, acting in horizontal direction. Another is Vy, acting downward. So v के दो कंपोनेंट हमने लिख लिए हैं, Vx एंड Vy. क्यों लिखे हैं? क्योंकि हमें मालूम है कि अगर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हमें किसी भी वेक्टर के मालूम है तो फॉर्मूला बनता है v इक्वल्स टू रूट Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर. Remember, if you have a vector and its rectangular component, then the resultant vector can be written in its rectangular components. ठीक है, रिमेंबर दिस फॉर्मूला. ये प्रीवियस टॉपिक्स आपका है जिसको आपको मालूम होना चाहिए. ओके, नाउ टू फाइंड द रिजल्टेंट वेलोसिटी, नाउ यू हैव टू फाइंड Vx एंड Vy. नाउ यूजिंग द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इन x एक्सिस, v इक्वल्स टू u प्लस at आपने पढ़ा है. अब इसे x डायरेक्शन तब कैसे लिखेंगे? Vx इक्वल्स टू ux plus axt. This is the first equation of motion in x direction. Now check and put the value. Vx हमें calculate करना है, and what is the value of ux? ux initial velocity का x component यानी equals to u. हमने पहले भी सीखा था, अभी आप चेक कर सकते हैं अपने previous फॉर्मूले में. Now, what is the value of ax? Acceleration due to gravity always works in downward direction. Ay की तब तो काम करता है, लेकिन
ax की तरफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काम नहीं करती है, तो इसमें इट इज़ 0. So it is 0 multiplied by t at any time. So what is the answer? Vx is equal to initial velocity u, initial velocity. Now the second, Vy. Again take the first equation of motion in y direction. Now in y direction, Vy equals to uy plus ay t. Now put the value. Vy हमें calculate करना है. Uy, is there any component of initial velocity in y direction? And answer is no, 0. So uy is 0 because initial velocity only is in horizontal direction. And what is the value of ay? That is minus g and then t. ठीक है, because this Vy, the direction of this Vy is downward, so we will take it negative. ठीक है, साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग डाउनवर्ड डायरेक्शन इज ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव. सो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन Vy इक्वल्स टू जी टी. हमने दोनों वैल्यू कैलकुलेट कर दिया है. यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों कंपोनेंट हमने निकाल दिया है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट Vx एंड Vy. नाउ व्हाट इज द रिजल्टेंट वेलोसिटी आफ्टर t टाइम? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 यू विल गेट दैट इज v इक्वल्स टू रूट Vx स्क्वायर मीन्स u स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर मीन्स g स्क्वायर t स्क्वायर. And this is our final velocity or resultant velocity of the projectile at any time t. So remember the